You might have heard this from like every single person, successful person. You need to love yourself. You need to be obsessed with yourself. You need to love every single thing about yourself, like the way you look, the way you speak, the way you walk, like every single thing about yourself. And I think it's true. See, confidence is something which is developed. It's not something we are born with. It's developed. According to me, it's a journey. And इस journey की पहली step होती है self love, self obsession, accepting the way you are. And आज की इस वीडियो में we are gonna talk a lot about it. Hey everyone, this is me Swara, and trust me, I have been there. There was a phase in my life where I was my biggest hater. I like used to hate every single thing about me. But to now, I love myself the way I am. I have become that confident person about me. Now I actually believe in my potential, my capabilities, and this has helped me so far. And I'm sure ये वीडियो देखने के बाद this is going to help you as well. So मैंने कुछ ऐसी चीज़ें की अपने लाइफ में इनकलकेट की जिससे I started loving myself. So it's important. सबसे पहली चीज़, why is self love important? I mean, it's so basic. See, if you do not love yourself, you become like, if you are so insecure, how will you bring that confidence in yourself? Like, how will you bring that charm in yourself? And confidence is something जो हर जगह पर it's necessity. Like, if you're not confident, see, confidence is so necessary that even in small conversation with other people, like social interactions में भी confidence चाहिए होता है. And I mean, हर जगह पर confidence चाहिए ही होता है. So if you do not love yourself, you just hate yourself, how will you be confident? It's impossible to be confident when you hate yourself, when you don't like yourself, like when you feel you are the worst person, you are unworthy. So yeah, self love is the first step towards confidence is a whole journey. And उस journey को start करने के लिए सबसे पहली step I think is self love, self obsession. So yeah, मैंने कुछ चीज़ें की थी and I really want to share those tips with you guys, which will actually make you super duper confident, because ये चीज़ें will make you love yourself, will make you fall in love yourself. I mean, fall in love with yourself. Yeah. So first thing that I did was mirror practice. सो ये थोड़ा सा वियर्ड है सुनने को, बट ट्रस्ट मी, अगर आप ये 15 days भी रिलीजियसली फॉलो करते हो, you are going to see results. You are going to see the improvement in yourself, or maybe change in perspective of yourself, like about you. So what is mirror practice? ये ऐसा है कि आपको अपने खुद को लाइक अच्छे से मिरर में देखना है, एंड बहुत बार, दिन में बहुत बार कर सकते हो. सो यू नीड टू सी, ऑब्जर्व योर सेल्फ जस्ट एज किसी बहुत सुंदर इंसान को आप देखते हो. हाउ डू यू एडमायर देम, हाउ डू यू एम्ब्रेस देम. बिल्कुल उसी तरीके से आपको खुद को आईने में, मिरर में देखना है, एंड खुद के एक एक फीचर को एम्ब्रेस करना है. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ सो क्रूशियल कि आपको खुद को एडमायर करना है. लाइक आपको खुद के एक एक फीचर को ऐसे बोलना है कि वाह, दिस आईज, दिस लिप्स, लाइक दिस स्किन, दिस स्किन टोन, ऐसे डिस्क्राइब करना है इन अ अमेजिंग वे. ओके, जस्ट मान लो आप खुद को एक पोएट मान लो या ऐसा कोई भी, एंड जस्ट यू basically need to admire each feature of your own. And starting में it would feel so cringe. I know, I mean, I have been there. I absolutely know how much cringe does it feel starting में. But once you do it like at least for 15 days, you are going to see the results. So first चीज़ जो आपको करनी है, that is mirror practice. You simply need to go towards like mirror, खुद को देखना है, अच्छे से admire करना है. You need to embrace each feature of your own, of like your, be it your skin tone, be it your nose, eyes, like every single feature of your own. इससे क्या होगा? इससे पहली चीज़, आप अगर 10 बार खुद को ये चीज़ बोलोगे, आपका माइंड विल एक्सेप्ट इट. लाइक, yeah, your mind will accept it,
एंड यू विल एक्सेप्ट द वे यू आर विथ लविंग इट. आप खुद को पहली चीज़ एक्सेप्ट करोगे कि आप कैसे हो, एंड सेकेंडली आप कैसे हो वो अच्छा लाइक आप खुद को बहुत अच्छे से देखने लगोगे. दैट इज़ क्रूशियल. नाउ दिस ब्रिंग्स मी टू माई सेकेंड पॉइंट, विच इज़ please please please, like I beg, avoid negative talk, negative self talk. That is something which kills your confidence. Like see, basic है बहुत, like logical चीज़ है. Your body does not understand words. जो हमारे बॉडी है उसको वर्ड्स नहीं समझते, बॉडी को बस एनर्जी समझ रही होती है. सो इफ़ यू स्पीक गुड अबाउट योर सेल्फ, कैसी एनर्जीज रेडिएट होगी? ऑफकोर्स पॉजिटिव एनर्जीज रेडिएट होगी. तो अगर आप खुद के बारे में अच्छा बोलोगे तो पॉजिटिव एनर्जी रेडिएट होगी, एंड योर बॉडी विल एब्जॉर्ब दैट पॉजिटिव एनर्जी. एंड इफ़ यू टॉक निगेटिवली, मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो वैसी हूँ, आई जस्ट डोंट डिजर्व दिस, आई डोंट डिजर्व दैट, ऐसा वैसा बहुत नेगेटिव, दैट विल radiate so much negative energy, and your body will absorb negative energy, and your body will actually accept that thing जो आप खुद को बोल रहे हो. So second thing, please 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 avoid negative self thought. I mean self talk. अगर ये मन में thought भी आ रहा है ना, just stop it, like just stop it and divert yourself from that thought, ताकि आप self talk, negative self talk ना करो. Third thing is show up daily. Now, there's a huge difference between self-acceptance and self-ignorance. I mean, मैंने मान लिया कि मैं ऐसी ही हूँ, मैंने खुशी खुशी मान लिया उस चीज़ को, बट इग्नोरिंग माई सेल्फ, जैसे कि लाइक हाउ डू आई एक्सप्लेन इट. ओके सो जैसे आई हैव गेन वेट, तो मैंने मान लिया ओके आई हैव गेन वेट, एंड मैंने खुशी खुशी मान लिया ओके आई हैव गेन वेट. बट अगर मैं उस चीज़ को इग्नोर कर रही हूँ एंड आई एम नॉट एक्चुअली वर्किंग आउट फॉर माई बॉडी, आई विल बी ओबेस. मतलब हाँ, एंड आई वुड बेसिकली इग्नोर दैट थिंग अबाउट मी, एंड मैं सिर्फ एक्सेप्ट करूँगी ओके ओके ये हो रहा है. बट यू डू नॉट नीड टू डू दैट. यू नीड टू शो अप फॉर योर सेल्फ डेली. जो भी आपने रोज़ का टास्क बनाया है, या जो भी आपने रोज़ के डिसाइड किया है रोज़ का स्केड्यूल कि आज मुझे ये करना है, you need to do that, like you have to do that. That will give credibility to your body कि मैंने बोला है, मैंने किया है वो चीज़, जो मैंने बोली है चीज़ वो मैंने करके दिखाई. That little things will give you confidence in huge amount, and that is so important. Because see, if you become that person जो बोलता भी है, जो बोलता है वो करके दिखाता है, then you would eventually love yourself, right? So third चीज़ is you need to show up for yourself daily. फोर्थ चीज़, सी किसी चीज़ को कितने अच्छे से प्रेजेंट करते हो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट? सो फर्स्टली यू need not worry about yourself. Like I was extremely insecure about myself, my skin tone, specifically speaking, my skin tone, my looks, the way I look, like everything about me, but specifically about my skin tone and my features, the way I look. So how have I transformed that thing about me? So I just researched a little about myself कि हाउ डू आई लुक, लाइक हाउ डू आई प्रेजेंट माई सेल्फ. अपने आप को आप जितने बेस्ट तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो करो, बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू मेक यू लव, मेक यू फॉल इन लव विथ योर सेल्फ. सो रिसर्च अबाउट दैट कि आपको कौन से शेड्स सूट होते हैं, एंड सूट होना भी नहीं, लाइक उससे भी इम्पॉर्टेंट है आपको क्या पसंद है खुद के ऊपर. Like I hope you are getting what I'm trying to convey. I'm basically trying to convey कि you need to present yourself अच्छे से. So yeah, now moving on to our like last and next tip of the video. So this is amazing and so special to my heart. It's because this have made me learn something. This have made me learn satisfaction. Journal every day, like every day when you wake up, or yeah, journal or have a positive self talk. Like in second point we talked about how do we eradicate negative self talk. Now we are talking about positive self talk या फिर journaling करना is a part of that only. So I would do that. I would not actually journal, लिखती नहीं थी मैं, but I would actually
talk positively about myself, and that is important. You need to talk positively about yourself. You need to be thankful about yourself. You need to be थैंकफुल अबाउट एवरी सिंगल थिंग यू हैव, जो भी स्किल्स आप में हैं, जो भी चीज़ें आप में हैं, या मे बी जो फ्लॉज भी है अगर आप में, हर किसी में होते हैं. यू नीड टू बी थैंकफुल अबाउट देम, बिकॉज दैट इज़ द ओनली वे व्हेन यू विल like why you will love yourself, because acceptance is the key towards self love. That is what I feel, and that is what I have experienced myself, कि when you accept yourself you start loving it. And just remember, if you are someone insecure about yourself, and you are someone who are not actually, who don't trust about your own capabilities, let me tell you this: insecurities are temporary. Underconfidence is temporary. The most confident person that you see today was the most underconfident person once. So it's a journey, and it's extremely doable. I really want you guys to follow all the 5 practices that I've told you religiously, and I bet you are going to see the results. So that was it for this video. I hope this video has brought a little value in your life. If it did, do not forget to like, share, and subscribe to this video. And yeah, lastly and very importantly, you are perfect the way you are. Love yourself, and you are the best. Okay, we'll see you in the next video. And yeah, these videos are, like, I am very sure about it that this video is going to change your life, and such videos will definitely bring more value in your life. Okay, till then, bye bye, and you are perfect.